So let's start today's class. So in this class we are going to discuss about refraction of light. तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, कई सारी चीजें हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में। उन्हीं में से एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। So what is refraction of light? What causes refraction of light? What are the laws of refraction of light? Then we will go for refractive index and refraction through different mediums such as glass block of things or prism। तो इस तरह की चीजों से रिफ्रैक्शन कैसे होती है, हम लोग के डे टू डे लाइफ में कहाँ पे रिफ्रैक्शन हम लोग देख सकते हैं। So all these things we are going to understand in this class. So before we go for a refraction of light, as I had asked a question that what is light, light होता क्या चीज है, पहले तो हम लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है। तो हम लोगों ने क्लास 7 में लाइट के बारे में डिस्कस किया था। We had understood what is light and what are the different properties related to light. So let's recall those things in a very quick manner so that we can go for the new topic over here. So when we do used to say light, then light is a portion of the electromagnetic spectrum or the electromagnetic radiation which used to be emitted by any kind of luminous body. So whenever we do used to observe a luminous body, it used to emit out photon particles. So luminous bodies, I hope everyone remember that what are luminous bodies. Any body which has an ability to release out light, or any body which has light of its own, they used to emit out the photon particles, the energetic particles, and these photon particles or energetic particles which are coming through it, so it causes an electromagnetic spectrum or electromagnetic wave pattern. And from that one, a visible portion which we do use to identify, that is called to be as the visible light. तो जिस हम लोग जो लाइट अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग देखते हैं, वो असल में एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन है या हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग देख नहीं सकते हैं। दैट कैन बी इंफ्रारे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स हैं। उन्हीं में से एक कॉलम है विजिबल लाइट, और हम लोग इसको देख सकते हैं। एंड लाइट हैज अ टेंडेंसी, और वी डू यूज टू से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes us able to see anything. लाइट हम लोगों को किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली वी आर एबल टू सी एनीथिंग। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस होती है, इसीलिए हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Just imagine if you are in a very dark room where there is no window, no door is open over there. You had just entered over there and there is no light. Can you able to identify anything? No, you will not be able to see anything. You will not be able to identify that there any of the object which is present over there. Why? It is because there is no light. Light is the component which is necessary for our vision. Our vision is because of the presence of light. If there is no light, we will not be able to see anything. So light makes us able to see anything. Now, how light makes us able to see anything? Over there we have to understand some of the properties regarding to the light, that is the rectilinear propagation of light, reflection of light, refraction of light. So there are properties, and those properties help us to understand the presence of light as well as to identify any object with the help of light. Now, one of the things which you need to remember, we will discuss this in detail in our higher class when we will go for it. So what is that? That is the, as I said, that light is a small portion, or the visible light is the small portion of the electromagnetic spectrum. That spectrum has different column of energetic waves, and they have different wavelength. So the visible light which we do use to observe, that is between 400 nanometer to 700 nanometer, the light range which we do use to observe. देखो, जो हम लोग लाइट देखते हैं, जिस भी लाइट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको विजिबल लाइट कहते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे भी कई सारे कॉलम्स हैं। हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में। और उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कई सारे अलग अलग कॉलम्स,
और उस कॉलम में हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, अल्ट्रा वायलेट होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं। इसमें से कुछ कॉमन, जैसे कि एक्स रेज को तुम लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। एक्सरे जो की जाती है टू आइडेंटिफाई द ब्रोकन बोन, या फिर तुम्हारे घर में माइक्रोवेव ओवन होगा, तो माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। तो ये जो 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है हम लोगों का विजिबल लाइट रे, और वो विजिबल लाइट रे ले डाउन करता है बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसके बीच के कॉलम को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट के वजह से हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। इसीलिए लोअर क्लास में एक बड़ा कॉमन सा डेफिनेशन दिया हुआ रहता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स अस एबल टू सी एनीथिंग। बट व्हाई इट मेक्स अस एबल टू सी एनीथिंग, और हाउ इट मेक्स अस एबल टू सी एनीथिंग, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ एक छोटा सा चीज जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, when we do use to study about light, we do know we do use to say this thing that light used to travel in a straight path। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, मींस द लाइट रेज और द फोटोन पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। बट वी हैव टू से दिस थिंग दैट इन अ गिवन मीडियम, in a given medium, in a given medium, so for a particular medium, light ray will travel in a straight path. But if the medium will change, that we are going to understand over here when we talk about medium। जब हम लोग मीडियम के बारे में बात करते हैं, I hope everyone remember what we had studied in our previous class, that is transparent, translucent, and opaque. So these are the three different mediums we had studied earlier, where we had understood that through opaque medium, light rays unable to cross through, and there we had observed reflection of light. If you all remember, we had studied reflection of light in our previous class, where we had understood this thing, that when light rays used to fall on or come on an opaque object and it is unable to cross through, then it just bounces back in the same medium, and this bouncing back of light ray in the same medium is called reflection of light. Now, why I'm saying this thing again and again? Because on the basis of on the basis of this medium, we are going to understand refraction of light. To understand the refraction of light, we have to understand the tendency of the medium. So when we had gone for the opaque medium, then we had seen that light rays unable to cross through it, and thus it got bounced back. But when we do use to observe for transparent and translucent object, then light ray can pass through it. From translucent, partially light rays can pass through it, and from transparent, completely light rays can pass through it. So when the light rays passing through there, we will observe refraction of light. Okay. But before that one, once again, rectilinear propagation of light. What does the rectilinear propagation of light tells us? According to the rectilinear propagation of light, we do understand that light ray always travels in a straight line, but for a given medium. So जब तक light किसी एक given medium में travel कर रही है, तब तक वो एक straight line पर, वो एक सीधे रास्ते पर ट्रैवल करती रहेगी। लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा, तब हम लोग देखेंगे एक तरह का डिफरेंस वहां पर होने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस वन। So when we had understood for the reflection of light, we had seen this thing that the reflection occurs from an opaque object. So as I was talking about right now, there are mediums. So we had seen this thing that when the light ray hits to any opaque medium, it gets bounced back in the same medium, and that is called to be as the reflection of light. But we have to understand over here as refraction of light. So what is refraction of light, and how refraction of light is different from reflection of light, that we will come to understand with this table. But before going to the table, I'm just going to explain you in a little bit simple way. Then I will move to that particular table. So I will take two very basic example, and with that one, you will be able to understand the difference between reflection and what we are going to understand about refraction.
So say as for example, there is a transparent glass sheet. Okay. So मान लो एक transparent glass sheet है. ठीक है. You all may had experienced about a transparent glass sheet at different places, such as for example a glass panel, which is present in the window, or a glass column anywhere present in the showcase, or anywhere wherever you can see a transparent glass sheet. I'm talking about a transparent glass sheet. And then I'm talking about uh, a mirror, a plain mirror, a simple plain mirror I'm talking about. Okay. So now what are the differences we are going to observe if the light ray will fall on these two objects? अगर हम लोग इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लाइट को लेकर आते हैं किसी एक सोर्स से, किसी एक ल्यूमिनस बॉडी से, then what we are going to observe over here? हम लोगों को यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होने वाला है, हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? So when we had discussed about reflection of light in our previous class, we had understood when the light ray will fall on a mirror, it will get bounced back. It will just get bounced back, which is called to be as reflection of light. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Reflection of light. We do used to call to be as a reflection of light. So what is reflection of light? When the light ray used to hit any opaque body, it is unable to cross through it and gets bounced back in the same medium, then it is called to be as reflection of light. But what will happen to the light if it comes to a transparent body? So when the light ray used to hit to a transparent body, then it is going to cross through it. It is going to cross through it. And while it is going to cross over here, we will observe that it will leave its previous path and bend to a new way. यहाँ पे देखो, ये इसकी पाथ होनी चाहिए थी. According to the rectilinear propagation of light, हम लोग अगर देखते हैं तो इस लाइट रे को इधर से ट्रैवल करना चाहिए था, but it is not traveling through this. What happened? It got bent over here. ये यहाँ पर bend हो गई. So the thing which we have to remember over here, when the light ray is traveling from one medium to another medium, then it gets bounced back. Obviously, if the transparent medium is there, light ray will pass through it. It will cross through it. But while it is going to cross through it, it is going to bend from its actual path. This bending of light ray is called to be as refraction of light. देखो फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो. जब हम लोग लाइट रेज को किसी ओपेक बॉडी पे लेकर आते हैं, हम लोग को पता है जहां पे ओपेक बॉडी का हम डेफिनेशन देते हैं कि लाइट रेज अनेबल टू क्रॉस थ्रू इट. तो जब कोई लाइट रे ओपेक बॉडी को हिट करती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो वहां पर बाउंस बैक कर जाती है. इट गेट्स रिटर्न बैक ओवर देयर. सो ये जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट रे की उसी मीडियम में, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, तब हमें वहां पर दिखता है कि वो लाइट रे उसमें से क्रॉस कर सकती है. लाइट रे कैन पास थ्रू इट. लाइट रे यहां पे पास कर जाती है. बट when we do observe it carefully, we observe it like this, that when the light ray is passing through it, it gets bent from its actual path. वो अपने actual path से bend हो जाती है. And this bending of light ray, ये जो light ray transparent object से cross होते समय bend होती है, इसी bending of light ray को हम लोग क्या कहते हैं? Refraction of light कहते हैं. So when we do used to understand about the refraction of light, so once again, what is refraction of light? Refraction of light is a process or a way where we do observe light ray gets bent when it is traveling from one medium to
another medium. जब light ray एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो वो bend कर जाती है, and this bending of light ray from its actual path or actual way, it is called to be as refraction of light. So this is the basic thing which we have to understand in this chapter. यही basic topic हम लोग को discuss करना है. चलो इसी को detail में अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. So over here we are having some differences. So reflection और refraction में क्या क्या difference होती है उसको हम लोग यहाँ पर discuss करने की कोशिश करते हैं. So I hope that you all had understood the basic concept. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अगर हम लोग reflection के बारे में बात करते हैं. So reflection of light is bouncing back of light ray in the same medium. Now what is refraction of light? Refraction of light ray is bending of light ray when it is traveling from one medium to another medium. इसको और डिटेल में भी हम लोग समझेंगे कि ये बेंडिंग किधर की तरफ होती है, कितनी होती है, क्यों होती है, इन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. फिर जब हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए देखते हैं तो रिफ्लेक्शन के लिए नेचर ऑफ द सरफेस कैसा होना चाहिए, किस तरह के सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है. सो वी नो दिस थिंग दैट एनी काइंड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट विल काउज रिफ्लेक्शन, बट अ शाइनी सरफेस, जो शाइनी सरफेस होती है वो सबसे अच्छे रिफ्लेक्शन करती है. वेयर वी हैड अंडरस्टूड अबाउट द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है. तो वो जो शाइनी सरफेस होती है उसमें से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होती है. But when we do used to understand about refraction, जब हम लोग refraction के बारे में बात करते हैं, then we not need a shiny surface, but we need any kind of medium which can allow the light ray to travel. तो वहां पर या तो transparent या तो translucent object होना चाहिए जिसके basis पर refraction हो सकती है वहां पर. फिर जब हम लोग रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इफ यू ऑल रिमेंबर वी हैड सीन दैट इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ इवन सरफेस, अगर इवन सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है then all the reflected light rays are parallel to each other with respect to the incident ray. लेकिन अगर irregular surface होती है then we do used to observe that the bouncing of light ray used to be uneven over there. वहां पे uneven pattern में वो reflection करती है. So that is called to be as regular and irregular reflection. But when we come for the condition of reflection, we do used to observe there is only one pattern of refraction only where the light ray gets bent from its actual path. Now occurrence, who used to cause reflection and who used to cause the refraction. So basically we do give the example of mirror से basically reflection होती है and lenses से refraction होती है. देखो एक interesting चीज हम लोग आगे क्लास 10th में जब डिस्कस करेंगे फिर से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि जब लेंस से रिफ्रैक्शन हो रही होती है then a little bit reflection also goes over there. ठीक है. जब भी हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्शन भी होती है, बट रिफ्लेक्शन यूज्ड टू काउज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. सो दस वी डोंट यूज टू ऑब्जर्व इट और वी टेक इट एज अ नेग्लिजिबल वैल्यू. उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते. तो बेसिकली मिरर से हम लोग देखें तो रिफ्लेक्शन होती है और लेंसेज से रिफ्रैक्शन होती है. सो इस तरह से हम लोग कई सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, or when I will give you the video, you just pause the video and go through all these points which are giving you the differences between the reflection of light and refraction of light. Now let's understand the refraction of light in more detailed form. तो थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. इस एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीडियम के चेंज होने से होती है. So once again, when we do used to talk about refraction, refraction is just only the bending of the light ray when it is passes from one medium to another medium, and this bending is caused due to the difference in density. When we do used to observe the different kinds of mediums, where as we are saying about the transparent or translucent mediums, they have different density. Basically we call it as optical density. हम लोग एक टर्म कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी.
And due to this change in the optical density, we do used to observe that the light ray used to bend from its actual path. Now, what is optical density? We will study it in the higher class, but in this class for you all, you just understand it in a simple way. It is the tendency of a particular medium by which it allows the light ray to travel through it. ये बेसिकली एक ऐसा टेंडेंसी है, यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर वो मीडियम अपने अंदर से लाइट को क्रॉस होने के लिए हेल्प करती है। देखो, इसको समझते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एयर हो गया या वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, या प्लास्टिक हो गई। ये सभी चीजें तो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंट के लिए जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर दोस काइंड ऑफ मीडियम्स थ्रू विच लाइट रे कैन पास थ्रू इजीली, जिसके अंदर से लाइट रे इजीली पास हो जाती है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो एयर से भी लाइट रे ट्रांसपेरेंट ट्रैवल कर सकती है, वाटर से भी लाइट रे ट्रैवल कर सकती है, ग्लास से भी ट्रैवल कर सकती है, प्लास्टिक से भी ट्रैवल कर सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इज इट दैट light ray will travel in the same manner or it will travel in the same way through all these given mediums? क्या इन सभी मीडियम से लाइट रे उसी तरह से ट्रैवल करेंगी जैसे कि किसी एक दूसरे से ट्रैवल करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स से अलग होते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से अलग होते हैं, प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लास या वाटर या एयर के पार्टिकल्स से अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो पार्टिकल्स की जो नेचर है, जिसके वजह से वो लाइट रे को एक पर्टिकुलर पैटर्न में उनसे उनसे क्रॉस होने देती है, that particular thing determines the optical density, and on the basis of that we do use to observe that the light ray gets bent, and this bending of light ray is called to be as the refraction of light। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हुए हैं, यहाँ पर एयर है और यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। अब अगर हम एयर से ही लाइट रे को ट्रैवल करते हैं, तो से एज फॉर एग्जांपल ए टू ओ, ठीक है। तो देखो, ए से ओ तक जब लाइट रे आ रही है, इट हैज द सेम मीडियम दैट इज एयर। यहाँ पर सेम मीडियम है, जिस वजह से वो यहां से यहां तक स्ट्रेट पाथ पर आ गई। बट एट दिस पॉइंट ओवर हियर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है? देयर इज अ चेंज इन द मैटर। यहाँ पे मैटर चेंज हो रही है। सो व्हाट द मैटर इज चेंजिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रहा है, तो यहां से ग्लास स्टार्ट हो गया। Even though glass is also a transparent medium, but it will not allow the light ray to travel through it in the same manner as the air had done it earlier. And because of this, what will happen? The light ray had suffered a bending over there. So it had to travel this path. It had to travel this path according to the rectilinear propagation of light. But what happened? Due to the change in the medium over here, it got bent down. And as it got bent down from its actual path, we had observed refraction of light. And that is the thing which we do use to experience every day in our surrounding. We do used to say that light makes us able to see anything. But how do light makes us able to see anything? Light makes us able to see anything because of reflection as well as refraction. रिफ्लेक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्लेक्शन के वजह से लाइट रेज बाउंस बैक करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट रे हिट की, उससे बाउंस बैक की, एंड आफ्टर बाउंसिंग बैक इट कम्स टू आवर आईज। In our eyes, we do used to experience refraction of light. हम लोग के आंखों में रिफ्रैक्शन होती है, and because of that refraction of light, we are able to see anything. Now, one a very good example which I can give right now, the screen in front of which you are sitting right now, whether you are sitting in front of a mobile phone, whether you are sitting in front of a tablet or a laptop or a desktop, whatever kind of a screen you are using right now, light is emitting out from that screen. And the light ray which is coming out from the screen, it is going through your eye, and in your eye a refraction causes.
And because of that refraction of light, you are able to see the things what are there on the display. So that is the refraction of light which makes us able to see anything, not only just the reflection of light. We can't say that only reflection of light makes us able to see anything. Refraction of light is equally important for the visible things or to identify any of the things. Now, before we move ahead, हम लोग इससे पहले कि कुछ और भी डिस्कस करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, हम लोग कुछ टर्म के बारे में समझ लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना है. एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग डेफिनेशन या फिर जब डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में, तब भी इन टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट, एंड आई होप दैट सम ऑफ द टर्म्स यू नो फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सच एज फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे. So what is incident ray? Incident ray is the light ray which is coming from any of the source on the surface. Okay, so जब हम लोग रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कहीं पे भी देखते हैं, तो जिस भी सोर्स से लाइट रे आती है, जो लाइट रे उस सोर्स से आ रही होती है, that is called to be as the incident ray. So the light ray which falls on the boundary of the separation from where the reflection or refraction has to occur, that is called to be as incident ray. Next is the refracted ray. So what is refracted ray? So when the light ray crosses the medium, such as over here also I had taken the example of air and glass. So at the beginning over here, you can see the light ray is traveling in the air, and at this point it got traveled, or it is now not traveling through glass at this point. So when it is going to enter from air to glass, then this light ray which is entered over here by bending formation, that is called to be as the refracted ray. Okay. Next is the normal. So normal is a perpendicular line which we do use to draw to just separate out the position of the incident ray and the refracted ray, so that we can distinguish them each other, as well as we can identify that where the light rays is going to bend and from where the angle is going to form. That is also very important for us. Now, this is an imaginary light ray. So the normal is not an actual light ray. It is just an imaginary line or a perpendicular line drawn on the surface just to separate out the incident ray and the refracted ray. Next is the angle of incidence. So as we had done in laws of refraction, the condition of reflection, over there also we had understood the angle of incidence. So the angle of incidence is the angle which is forming between the incident ray and the normal. So over here, this is the angle of incidence. Again, the angle which is forming between the incident ray and the normal. अच्छा, ध्यान रखना, इसमें काफी सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल कौन सा लेना है, ये नीचे वाला एंगल लेना है या ऊपर वाला एंगल लेना है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग दिस थिंग, that the angle which is forming between the normal and incident ray, so this is the angle, this angle, not this angle, not this angle. So this angle is called to be as the angle of incidence. Next is the angle of refraction. So what is the angle of refraction? So again, the angle which is formed between the refracted ray. So this is our refracted ray. Over here, this is the refracted ray, and over here, this is the normal. So the angle which is forming between the normal and the refracted ray is called to be as the angle of refraction. Now, there is emergent ray. Now, there is not necessary that always emergent ray will form, but in a certain condition, we may do use to observe emergent ray is also present. So, such as for example, here I had taken the light ray which is coming from air to glass, and after traveling for a period of time in the glass, it had again moved out from glass to air. So when the light ray is coming from the glass to air, then it is changing the medium for the second time. At the first time, it had moved from air to glass, and now it is moving from glass to air. So while it is moving out from glass to air, again a bending of light will be observed. See, this had to be the path, but it had bended over that side. So this bending of light ray will again show us refraction of light, and this light ray which now it had bended over there, it will be called to be as the emergent ray.
Okay, so the ray which will come out after the refraction took place for the twice or for the second time through the medium, that is called to be as the emergent ray. And the angle which is forming over here also we can draw a normal, and the angle which is forming between the normal and the emergent ray, that is called to be as the angle of emergence. That is the angle of emergence. Okay, now one more thing is there, that is the angle of deviation. So remember students, angle of deviation is not given in your class syllabus right now, but I will just give you a little bit of hints of that one. What is angle of deviation? Angle of deviation is the angle between the actual path ray of the light and the refracted light ray. So see, if I do used to see for this incident ray, over here it has to travel through here. It has to travel through here. But the angle which is forming over here for the light ray which had got refracted over here, this one is called to be the angle of deviation. So this is angle of deviation which is forming between the actual path ray of the light and the refracted light ray. Okay, so this is called to be as the angle of deviation. So please remember for these terms, because these terms are very important for understanding the condition of refraction of light. So I hope that everyone had understood till here. If there is any doubt or any question till this point, is there any problem? यहाँ तक किसी को कहीं पे कोई भी problem है तो पूछ सकते हो. If anyone is having any doubt or any confusion, anything you want to ask. Yes, do anyone is having any problem anywhere? No, sir. No. Okay. Okay then. So we don't have much time, but I will just go for a last topic, and then from the next topic we will see tomorrow. So as I was talking about the medium, so medium is very important because the medium is only the basic term which I will say, or the component which I will say, which makes the refraction possible. So refraction causes due to the change in the medium. So what do we mean about the medium? So as I had already said, medium is the transparent or the translucent medium we are talking about. And that medium can be classified as a rarer medium or a denser medium. Now, what is a rarer medium and what is a denser medium? So in a very simple way, for now, you can say that those kind of medium or those kind of components or those kind of pathway which will have less optical density. Okay, remember as less optical density means high speed. It has high speed of light. It will be called to be as rarer medium. Whereas optically denser medium, what I will say as optically denser medium. So optically denser medium, you remember it as more optical density and low speed of light. Low speed of light. Okay. So that is called to be as denser medium. So as today's class is going to end in few seconds, so I will not discuss more on this one, but in tomorrow's class, I will continue from this particular topic and we will discuss what is rarer medium, what is denser medium, how optical density used to determine the speed of light, and how the speed of light causes the refraction of light in different mediums, and how refraction used to cause in different mediums. Okay, so please all of you revise till here.